Good morning, students. After unit test, today we are going to complete our literature portion first. So, in our literature portion, today we are going to read our poem, The Ball Poem, which is composed by John Berryman. So, in this poem, dear students, the poet beautifully describes about the importance of things in our life. Either it is materialistic things or any relation. Whenever we are losing anyone, then we are suffering a lot of pain. So, in this poem, the poet wants to teach us that all these losses are not permanent, right? So we have to learn a lesson from this poem. In this poem, first I am going to describe you about the two starting stanza. In first stanza, it is written here, what is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. So in this first stanza, as we can see here, there is a boy and who lost his ball. So dear students, here for the ball is very important because he had spent a lot of time with it, and that moment was very pleasant. उस बच्चे को बहुत ही खुशी देने वाले वो समय थे, क्षण थे. So what is the boy now who has lost his ball? अब उस बच्चे का क्या, या अब वो बच्चा क्या करेगा जिसने अपनी बॉल खो दी है, गवा दी है. What is he to do? What he is to do? अब वो बच्चा क्या करेगा? I saw it go. मैंने देखा इसे जाते हुए. It means that particular ball. Merrily bouncing down. खुशी से नीचे की तरफ जाते हुए, जंप करते हुए, उछलते हुए. Down the street. नीचे गली की तरफ. And then merrily over there, it is in the water. और खुशी से उसे पानी में जाते हुए. Means जब बच्चा गली में बॉल से खेल रहा था, तो बॉल जंप करती हुई उस बच्चे से दूर गली में नीचे की तरफ गई और फिर पानी में चली गई. तो यहाँ पर पानी से मतलब है नाउ द बॉय लॉस्ट हिज बॉल. अब उस बच्चे ने अपनी बॉल खो दी है, गवा दी है. नाउ द बॉल इज अवे फ्रॉम द बॉल. सो नो यूज टू से. अब यहाँ पर ये कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा. इट इज नॉट फेयर टू से दैट देयर आर अदर बॉल्स. कि बॉल डोंट वरी, there are many balls, you can play with them, because particular ball has an important role, has an own importance in that particular boy's life, because he has spent a lot of pleasures time, a lot of happily time, a lot of merrily time with it. So in second stanza, as you can see here, an ultimate shaking grief fixes the ball. Now because the boy has lost his ball, so an ultimate grief, a sorrow, is fixes on the ball. बच्चा अचानक से बहुत ही दुखी हो चुका है अब. As he stands rigid, trembling, staring down, because now he is standing. Rigid means stiff, बुत बना हुआ, बिल्कुल just like a statue. Trembling, shivering, staring down, नीचे की तरफ देखते हुए, घूरते हुए. All his young days. Now dear students, here young days means the pleasures time. वो खुशी का समय जो उसने बिताया था उस बॉल के साथ में. Into the harbor, बंदरगाह में जाते हुए. That particular water means the particular area of harbor where his ball went. जहां उसकी बॉल जा चुकी है, जहां उसकी बॉल गए. I would not intrude on him. Now I am not going to interfere in this case with the boy because
the boy has to learn how to deal with this type of loss. So, a dime, another ball is worthless. Dime means here 10 cents, means a particular currency or the cost of the ball. So, if we are saying to the boy that particular this is the money, you take it and purchase another ball, that is ruthless, means that is useless. We should not say about this because it is not good, because it is not giving him a lesson that how to deal with the loss, because the losses are coming and going. We are getting new things, we are losing our old things in this way. Dear students, here is the best example which I want to share with you, that every year you are making new friends and you are just departing from your old friends. So the loss of your friends, because they are going somewhere or you are going anywhere. So in this case also we can say कि आपने अपने दोस्तों के साथ जो खुशी के समय बिताए थे, बहुत ही खुशी के समय जो एंजॉयबल थे, क्या हम उन्हें कभी वापस खरीद सकते हैं? क्या हम उन्हें वापस ले सकते हैं? नहीं, बट वी हैव टू डील विद देम. अगर हमने खोया है तो ये नहीं कि हम केवल उसी चीज को लेकर बैठे रहें, उसी चीज को लेकर रोते रहें, उसी चीज को लेकर पछतावा करते रहें. दैट इज रॉन्ग, because in our life we have to move further, we have to move ahead, so that we are going to go many new things through which we are going to get our happiness. So here a dime, another ball is worthless, means if you are saying that take this money and purchase a new ball, that is wrong. Now he senses first responsibility. This is the very best line, very good line of this point, the best lines of this point. In a world of possession, in a world of possession. Possession means, dear students, I want to explain this word, means everyone wants that this is mine, this is yours, in this way. So जहां पर हर एक चीज पर हम ये सोचते हैं ये मेरी है या केवल इस पर मेरा अधिकार है. So here in this world we are going to learn a new lesson, because he seems first responsibility. Now he was learning, he is learning his first responsibility, उसकी पहली जिम्मेदारी कि मुझे इन सब चीजों को डील करना है, मुझे इन सब चीजों से बहुत कुछ सीखना है. So in a world of possession, इस अधिकार वाले संसार में, in this world of possession. So these are the starting two stanzas in which John Berryman beautifully explains that in this world how to deal with the losses, or if we are going to lose anything, then how can we avoid from all those sufferings, from all those pains. So dear students, here are some word meaning from these two stanzas. First one is rigid, means stiff. Second, a dime, means 10 cents, or we can say currency. Third, trembling, shivering. From intrude on, that means to interfere. And in starting first stanza, merrily. Merrily means happy or happily. So read these two stanza carefully. Now we are going to read next two stanza. So dear students, here are next two stanza in this point. So in third stanza, as you can see here, people will take balls, balls will be lost, always the little boy, and no one buys a ball back, money is external. He is learning well behind his desperate eyes this epistemology of laws, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days.
how to stand up. So dear students, here in these stanzas there are two new words. First one is external. External means superficial, and second one is epistemology. Epistemology means study of knowledge. So before starting these two paragraphs, two stanzas explanation, I want to share a story, a small story through which we can easily understand these two stanzas and the conclusion of this poem. So this is also in our syllabus, which I am going to share with you. You have heard about Gautam Buddha, Mahatma Buddha. So one day a old lady came to him and she was begging to Buddha that her only grandson died, and she had heard about Buddha that he can do a magic and he can give her grandson again a life. वो उसके पोते को एक नई जिंदगी दे सकता है. तो गौतम बुद्धा ने उससे कहा, उस ओल्ड लेडी से, कि आप जाकर गांव में से किसी एक ऐसे घर से अनाज लेकर आइए, एक मुट्ठी अनाज, जिस घर में कभी किसी की डेथ नहीं हो, क्योंकि वो ओल्ड लेडी एक अल्टीमेट ग्रीफ से सफर कर रही थी. एट दैट टाइम वो कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं थी. अगर कोई कितना भी उसे कुछ समझाए तो वो शी कांट अंडरस्टैंड. सो शी हैप्पीली एग्रीड विद इट एंड शी इज गोइंग टू डोर टू डोर टू बेगिंग फॉर ए मुट्ठी भर अनाज के लिए. सो इन दिस कंडीशन, व्हेनेवर शी वाज आस्किंग टू एनीवन, सो एवरीवन इज रेडी टू हेल्प हर कि ठीक है आप इतना अनाज ले जा सकते हैं. But when she was asking that if there is anyone who died in that home, so everyone was saying yes, हाँ मेरे वो कभी उनका देहांत हुआ था, वो कभी एक्सपायर हुए थे. सो जब डोर टू डोर वो ओल्ड लेडी एक घर से दूसरे घर जाती है, वो उन लोगों को समझती है, उनकी भावनाओं को समझती है. चाहे किसी घर में रिसेंटली हुआ था कैजुअलिटी, या किसी के घर में बहुत पहले कैजुअलिटी हुई थी, लेकिन एट दैट टाइम फाइनली शी अंडरस्टैंड दैट व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ दिस डे. कि बुद्धा ने, गौतम बुद्ध ने उसे घर घर जाकर ये अनाज की एक मुट्ठी लाने के लिए क्यों कहा था. सो फाइनली उसे तब समझ में आया. सो इन द सेम वे हियर, अब मैं इस स्टोरी को इस पॉइंट से कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो एपिस्टेमोलॉजी थी, स्टडी ऑफ नॉलेज, उस बच्चे को मिली, नोइंग व्हाट एवरीवन मस्ट वन डे नो एंड मस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप. कि अधिकतर लोग बहुत दिन लगा देते हैं या पूरी जिंदगी लगाते हैं इस चीज को जानने में, और कुछ लोग केवल कुछ दिनों में जान जाते हैं, सीख जाते हैं किस तरीके से स्टैंड अप किया जाए. स्टैंड अप से मतलब खड़े होने से मतलब नहीं है. स्टैंड अप से मतलब है उन टिपिकल सिचुएशन से कैसे अपने आप को दूर किया जा सके, उन अल्टीमेट ग्रिप से जिनसे हम सफर कर रहे हैं, उनसे हम अपने आप को कैसे अवॉइड करें, किस तरीके से उनको फेस करें, किस तरीके से जो चीजें हमारे पास हैं केवल उन चीजों से हम अपने आप को खुश रख सके. सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस पॉइंट. सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस two stanzas. So people will take balls. लोग बॉल खरीद लेते हैं. Balls will be lost always. और जो balls हैं वो हमेशा खो जाती है. That means पर्टिकुलर कोई चीज आपने खरीदी तो पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड होता है जब तक हम उस चीज को अपने पास संभाल कर रख पाते हैं. But one day we have to lose that particular thing. So and no one buys a ball back. If you are losing your ball, then you are not going to purchase it again because you can't purchase it. Here, इस लाइन को हम दो तरीके से समझ सकते हैं. पहली चीज
कि जब हमारी कोई प्रिय चीज, कोई भी हमारी जो क्लोज चीज थी, जब वो हमसे दूर चली गई है तो हम उसे कभी भी वापस गेन नहीं कर सकते हैं। एंड सेकेंड, अगर हम खरीद भी लेते हैं, सपोज आपकी बॉल खो गई है और आपने दूसरी बॉल खरीद ली है, तो वो बॉल उस पर्टिकुलर बॉल को रिप्लेस नहीं कर सकती है, बिकॉज जो आपने अल्टीमेट एक खुशी का टाइम उस बॉल के साथ गुजारा था, जो हैप्पी मेमोरीज आपकी उस पर्टिकुलर चीज के साथ जुड़ी हुई थी, जरूरी नहीं है कि वो इस चीज के साथ भी जुड़ेंगे, हाँ, बट न्यू थिंग्स विल बी certainly join it soon. So money is external. Here money is not a great matter, means on the behalf of money you can purchase everything, but those pleasures times, those happy moment you can't purchase. So money is external. External means here this is a new word for you, superficial, right? मतलब ठीक है, मनी की हमें जरूरत है, with the help of money we can do anything, we can purchase anything. So next, he is learning. Here last stanza, this is the last stanza, and dear students, read it carefully because this is the conclusion of the whole poem. Here in these lines, जो point का conclusion है वो छुपा हुआ है. He is learning well. He is learning well. Who? The particular boy, little boy. He is learning properly behind his desperate eyes. Desperate eyes means निराश भरी आंखों से वो देख रहा है, और उस चीज को देखकर वो महसूस कर रहा है, वो सीख रहा है एक ग्रेट लेसन. दिस एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, ये जो नुकसान हुआ है, इससे जो उसे महसूस हुआ है, जो उसे ज्ञान मिला है कि ये चीजें खो गई, अब इससे मुझे इन फ्यूचर कैसे डील करना है, हाउ टू स्टैंड अप, इससे मैं कैसे बाहर निकलूं, कैसे मैं इस दुख से दूर जाऊं, नोइंग, जानते हुए, व्हाट एवरी मैन मस्ट, जो कि हर एक आदमी को जान लेना चाहिए या जानना होगा. पर्टिकुलर इन दिस वर्ल्ड एवरीवन हैव टू फेस दिस कंडीशन, एंड देयर आर ए लॉट ऑफ person who are learning it lately, and many people are there who are learning it properly before the time. So how to stand up, knowing what every man must one day know, कि सबको एक ना एक दिन ये चीज जाननी पड़ेगी, सबको हमें ये इस चीज को फेस करना पड़ेगा. एंड मोस्ट नो मेनी डेज, एंड मोस्टली अधिकतर लोग इस चीज को बहुत दिनों में सीख पाते हैं. जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, एक छोटी सी कहानी आपसे शेयर की कि जो पर्टिकुलर ओल्ड लेडी थी, उसे ये चीज समझने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि वो एक अल्टीमेट ग्रीफ से सफर कर रही थी, क्योंकि वो केवल और केवल अपने बारे में, अपने ग्रैंडसन के बारे में सोच रही थी. बट when she met to other person, then she realized that everyone on this earth is suffering from the same problem, right? So how to stand up in this world? We have to learn this thing, that how to stand up. Stand up means here not to standing on our feet, means from out of suffering. How can we keep away ourselves from these sufferings, from these pains? So this is the conclusion, or this is the explanation of this poem, the whole poem, John Merriman. So in this poem we can say John Merriman beautifully describes about the human being nature and how to deal with such crucial conditions, right? So please look it again. Next we can see. So dear students, now this is your homework or assignment. On behalf of this poem, you have to solve all these questions. First question is, what is the significance of the phrase all his young days? All his young days, right?
ऑल हिज यंग डेज जो फ्रेज है इसका क्या मतलब है, यू हैव टू एक्सप्लेन. सेकंड, व्हाट इज दैट एवरी मैन मस्ट वन डे नो. एवरी मैन मस्ट वन डे नो, हर एक व्यक्ति को ये जानना होगा. इसका क्या मतलब है. थर्ड, what idea does the poet want to convey in this poem? Means through this poem, what idea poet want to convey us? I have already explained you this thing, so you have to answer this question also. Next, what is the boy learning from the loss of the ball? Means after losing the ball, which type of experience the boy had. So you have to explain this. Next, he senses first responsibility. Which type of responsibility or what type of first responsibility the boy was learning? What responsibility is referred to here? Next, name the poetic devices with examples used in this poem. कौन कौन सी poetic devices हैं इसमें और उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं वो आपको लिखने हैं. In about poetic devices, I am explaining to you here that in this poem there are assonance, repetition, rhyme scheme. In this poem there is no rhyme scheme, right? Assonance है, repetition है, इसके अलावा हम यहाँ पर बोल सकते हैं एनाफोरा. एनाफोरा भी इसमें यूज हुआ है. You have to find out where and how. So next and last, this is not short answer type question, but you have to explain it. Justify the title of the poem, The Bold Poet. So here are 7 questions which you have to answer. This is your assignment. Clear? So please note down it, and in next class we are going to discuss our next point. So till then, goodbye. Have a nice day. Please note, I am requesting to you all that please note down all these questions carefully. Thank you.